and when I will give you the marks, आप जब मैं आपको मार्क्स बताऊंगी, like I have checked this, I will tell you the marks. आप अपनी शीट में मार्क्स लिख के मम्मा को बोलना, स्केच पेन से लिख के आपकी नोटबुक में पेस्ट कर देंगे टेस्ट. आप एक शीट में कर लो, ठीक है, और फिर उसको स्टेपल कर लेना या पेस्ट कर लेना जैसे हम टेस्ट शीट्स लगाते थे क्लास में. फाइन. Okay everyone, so I am sharing my screen. Again you have 15 minutes to 5 minutes extra will be given to everyone. No, not an issue, but try to do as soon as possible as it is a very short test, and I request everyone, Abhi, Alisha, Siddhant, Sirat, Krishna, Keshav, Jagjot, to open up your cameras. Everyone, Chaitanya, please open up your cameras as you need to do this test with honesty. है ना? ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हम marks के लिए नहीं कर रहे. We are doing for ourselves. है ना? Some people I observed has done good in previous test also. So well done, everyone. And I want today everyone should send the sheet. Okay. Okay. Wait a minute. Before that, Aditya, 4th A1. Aditya. Yes, yes ma'am. Please tell your number. Last time only your sheet I am not getting. Rest everyone's sheet I have checked. एक बार आप नंबर बताओ जिससे आपने व्हाट्सएप करा था. Tell your number जिससे आपने व्हाट्सएप करा था बेटा. शीट मैम मैम याद नहीं आ रहा. मम्मा से पूछो और मेरे को बताओ. आज आप व्हाट्सएप करोगे ना तो नेम लिख के भेजना अपना, ठीक है? आदित्य 4th A. ओके 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 मैम. okay okay, so that I can get the previous sheet also. Okay everyone, I am sharing the screen. Arnav, any issue? Ma'am, no. Okay, all the best everyone, all the best. Yes Utkarsh. हाँ जी बेटा. मम्मा. हाँ, हेलो मैम. हेलो मैम. हेलो. उत्कर्ष ना अभी कहीं हम लोग जा रहे थे तो ये मैं आपको चैट करके उत्कर्ष आपको भेज सकता है क्या व्हाट्सएप पे आंसर? नहीं मैम, एक्चुअली फिर चेक करना प्रॉब्लम हो जाता है. देयर इज नो शीट नियर बाय. कोई शीट हो आपके पास? है लेकिन गाड़ी में लिखेगा कैसे? या तो ये चैट करके भेज देगा व्हाट्सएप पे. लेकिन फिर वही है ना, कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता है. एवरीवन इज डूइंग, दैट्स व्हाई. आपको बाद में इसको ना नोटबुक में कॉपी करके आपको ठीक है, आप मुझे आंसर्स भेजते रहो. ठीक है, फिर मेरे को. हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप लिख के भेजना लेकिन क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है मैम. ओके. नॉट फॉर एवरीवन एल्स. ओके, ओनली फॉर उत्कर्ष बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग टुडे. ओके. Stop annotating. Your test will be only delayed. And those who are annotating, and then again I'll put you in the waiting room. See, this is class test 2. Okay. And you need to write the date, class. So first, same the multiple choice question. First, understand everything. Okay. Multiple choice questions are there, that is of 0.5 marks each. Okay, you need to just write the option. Don't waste your time writing whole questions. Just write A, B, C, D. Put number 1, question number 1, part 1, answer A, B, C, D, जो भी option है. 2, answer A, B, C, D. Then it's fill in the blanks, that is of 1 marks. Focus on spelling. Many students last time has written wrong spellings. आपको spelling जल्दीबाजी की वजह से आपने गलत लिखी है. So you need to what? Write the spellings correctly. Okay, give a correct spelling. Then write capitals for the following. आपको capitals देनी है. Lakshadweep, Ladakh, Mizoram, Chhattisgarh. Then you need to, in one line, 1.5 line, not so big you need to write. You need to write the definition of
Indian Peninsula. Okay, now do the test. It's 46. Okay, I'll take at 12 2. Everyone should come at 12 2. I'll stop sharing at 12 5. Okay, I am taking the queries now. Start writing. Okay, you can start writing. Devansh, is there any issue, beta? Yes, ma'am. Yes, please ask. मैम आई वांट मैम हमें सिर्फ मैम हमें क्वेश्चन भी लिखना है Nahi beta, I explain in every test. You don't have to write question number, part 1, है ना? And answer A, B, C, D. Okay? ओके मैम Start writing, everyone. Yashin, give the test. I will not give the attendance. Last time also I have not given the attendance to those who have not sent me the sheet on the particular number. Yes, Ashwath. Taking the queries. Wait a minute. मैम Yes, प्लीज Ashwath. स्क्रॉल द स्क्रीन हाँ जी, 1 minute. Yes, Okay. I am scrolling. Okay. मैम हाँ जी बेटा आदित्य. मैम ये जो टेस्ट है आप भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में भेजोगे बेटा टेस्ट आपको व्हाट्सएप शीट पे अभी भेजना है मेरे को और मैं आंसर की भेजती हूँ लाइक फॉर प्रैक्टिसिंग दोज हु हैव नॉट अटेंडेड द क्लास फॉर दोज और यू कैन प्रैक्टिस एट होम आल्सो. ठीक है, बट अभी आपको मुझे शीट्स भेजनी है. फाइन. ओके मैम म्यूट योरसेल्फ नाउ. म्यूट योरसेल्फ. Seven sisters in the state dash are called और पढ़ो नेक्स्ट करो इसका है ये इसका है नेक्स्ट करो और क्वेश्चन नंबर तो डालो Yes, Dhruv. Betu, what happened? Want to ask something? in the fill in the blanks question Yes, beta. there is second question we can This- write in the answer and हाँ. Or put comma. Okay. okay ma'am thank you ma'am Taking up the queries. I'm seeing. Yes, Rudransh. ma'am what is the meaning of the northern boundary of India is protected The by northern part. The northern part. It means the northern part is covered with what? Is protected by what? mountains. Yes, Ashwath. Ma'am, please scroll the sheet. How much you have done? Fill in the blanks. Yes, ma'am. Okay. Okay.
Do with honesty, Garv, Gumbar, right? And do with honesty, everyone. I hope you will do yourself, not taking help of anyone. Yes, Vihan. Ma'am, Good morning. ma'am, MCQs, ma'am, we write only option and then Yes. option, then answer. You need to write only A, B, C, D. Okay. Nothing Okay, else. ma'am. Don't write the whole spelling and waste your time. Okay. Just write the option. Okay. And if you have time, Okay, then ma'am. you can write. Everyone do with focus, because you people in doing so fast and furious, before time you want to send the sheet, you write the spellings wrong. Okay. So do with calmness. Okay. Wait, Anna. Vihan, please mute yourself, beta. Arush, wait. Ma'am, please scroll down. We need to see others' speed also, Hana. Yes, ma'am. So together we'll go. Hanji, beta, Arush. Ma'am, I am also saying scroll down. Okay. Damanpreet, do. Gurnoor. I am sending the sheet on the WhatsApp group also. Those who are not able to join can do from there also. Okay. Class group. जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो वहां से कर लीजिए. Yes, Samagr. मैम ये फोर्थ क्वेश्चन जो
fill in the blanks कर Mm-hmm. the northern boundary of India is protected by the Protected by what? तो जो ऊपर नॉर्दर्न बाउंड्री है इंडिया की वो किससे प्रोटेक्टेड okay है? समक प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा. I have start getting up the sheets. Okay, I have got from Arnav Atri. Arnav, you have not done one question, beta. Arnav, you're left with one question. I think so. You forgot to do the last one. Question number 4. Where is Arnav? sorry Arnav, ma'am do it fast and then send the other sheet also. Okay. sorry ma'am Shashwat, I've got your sheet. You people have 4 minutes to go, everyone. Yes, Arav. Arav Agrawal. Any issue, beta? Any issue? You have any issue? ma'am no Okay. Shresht, I've got your sheet. Okay, Arav, please mute yourself, beta. Arav, please mute yourself. Hardik, I've got your sheet. Dhruv, I've got your sheet. Shresht, I've got your sheet, beta. Atashi, I've got your sheet. Garv, I've got your sheet. Garv, you have not done the whole test? Or you're sending the other sheet also? Shivansh, I think you forgot to do the question number 4. Shivansh? Shivansh, beta, you forgot to do question number 4 or you don't know question number 4? मैम मैम यहाँ पे दिखिए मैम यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दो मैम Okay, okay, I'm zooming. Okay, beta. मैम नीचे आई नहीं अच्छा, write and then again send. मैंने दोबारा देखो स्क्रॉल कर दी स्क्रीन लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन इंडियन पेनिनसुला राइट एंड अगेन सेंड द शीट ओके डू योरसेल्फ
Lian, got your sheet? Hannah, I've got your half sheet, beta. Send the other half. Tripti, I've got your sheet. I have sent the sheet on the class group as well. So those who are not able to do from here due to the network issue, so can see the test question from there and do complete your test. Okay, those who get disconnected. I've got Aditya. Aditya, I've got your sheet. Rudransh, I've got your sheet, beta. Prince Priest, Seerat, Ani, I've got your sheet. Gorish. Aditya, Pratap, I've got your sheet. Okay, Garv, I've got your other half also. Arav Agrawal, I've got your sheet. Start sending up your sheets now. Time is getting over. Siddhant. Siddhant, I've got your half sheet, beta. Siddhant, I've got your half sheet only. Siddhant. Yes, ma'am. Beta, I've got a half sheet only the definition part. Okay, okay. Ma'am, I'm sending question. Okay. Yes, Seerath, I've got your sheet, beta. Prince Preet, I've got your sheet. Prince Preet, you have not done anything. I've got a Varadhya, Vani, Lavanya, I've got Anna, Arav, Garg. Name you people are not writing. Still you people are not writing the name. Alicia, I've got Arush, Avi. Please send the clear picture, beta. I'm not able to see. Don't leave the class after doing test. We need to take the attendance also. Okay? Don't leave the class till the time I will not say.
I've got the sheet from Siddhim, Pavitra, Alicia, Arav Garg, Shivansh. Right now, Seerat, Divansh, Geet, I've got your sheet. Geet, beta, the first sheet is not clear. The upper one is not clear, beta. Geet, try to send it again. Mudit, I've got your sheet. Aditya, I've got your sheet. Okay, now I'm stop sharing. Time over. Done, everyone. Start sending up your sheets now. Shridhanya, have you done? have done. You've sent the sheet? Yes, ma'am. Okay. Okay, let me tell you marks of chapter number 1. Okay, those who have given test of chapter number 1. Okay, I'm telling you the marks of that. Yes, now it's clear, Geet. It's clear now. Okay, let me tell you. 2-3 students are left. I'll tell you in the next class. Those I have done. Let me tell you of them. Okay. Yes, Sujay. Sujay. सुजय मैम बुला रही है सुजय मैम बुला रही है Okay. So Shresht got 9.5 marks. Smile on Shresht's face. Oh my God. Okay. Okay. Dhruv also got 9.5. You can write your marks on your sheets with sketch pen. Okay. Vyan got 10 out of 10. Mudit got 10 out of 10. Gaurish got 6.5 out of 10. Aditya, you people have done, those who have got less marks, they have done right, but they have done spelling mistakes. And those who have done, those who have got very below marks, they have not done anything. So this was the category which I observed. Aditya got 5.5, Aditya Pratap. Okay. Hardik got 7. Aradhya got 7. Aradhya Mittal. Vardhan got 8. Arav. This is Arav Agrawal. That he has got 9.5 out of 10. Arnav got 7. Okay. Seerat and Utkarsh are left for the checking. Aditri got 10 out of 10. Sashwat got 10 out of 10. Sherwin got 7. Okay. Tripti got 4.5. Those have got less marks, no need to get demotivated. Do well in the next upcoming test. Okay, we'll be keep taking up your test. Arush got 9 out of 10. Shivansh got 8.5 out of 10. Archit got 9.5 out of 10. Gar Munjal got 6 out of 10. Okay, Devansh got 6 out of 10. Prince Preet got 4.5 out of 10. Vani got 9.5 out of 10.
Ahana got 8.5. Ahana, you have done mistakes in MCQ. 8.5. Arav Gar got 9.5. Where is Arav? Arav Vishesh के नाम से होगा. Where is Arav? He went out of the class. Arav Garg. He's not here? He's here. I think there is some connectivity issue. He's here. Arav? Yes, Arav? ma'am. Yes, ma'am. You got Yes, ma'am. 9.5. Happy? Yes, Happy? ma'am. So, this time Yeah, we ma'am. want Happy. You have got 9.5 Arav out of 10 in the previous test. Ma'am, chapter 1 of it 2. Chapter 1 test. 9.5. Good. Yes. Keep doing this way. Okay. Siddhim, you've got very less marks, beta, but I want good marks in the next test. Where is Siddhim? Let me check. I think she had left the class. Siddhim got 2. Rudransh, you got 7.5. Rudransh, everyone has done wrong. Most of the students have done wrong in reference points of map or elements of map. What are elements of map? Direction, scale, title, Hana? And most of the students have done wrong. How many lines of latitude are there if excluding equator? Excluding equator, it is 180. Total, it is 181. So you need to focus on that points, okay? Siddhant got 9 out of 10. Sukirat got 6 out of 10. Lavanya got 8.5. Agampreet got 1.5 out of 10. Krishna got 6 out of 10. Okay. Shridhanya got 5 out of 10. Keshav got 4.5 out of 10. Ayush got 7.5 out of 10. Pavitra got 6.5 out of 10. Avi got 1.5 out of 10. Chaitanya got 5.5 out of 10. Rajveer got 5 out of 10. Rajveer, you have done like you were not able to do in class, but he has done good. So Aditya, it still need to check due to the number. I was not able to check. Only 3 students are left. Abhi Rathore, where is Abhi? Abhi, Yes, ma'am. I didn't expected this low marks from you. Where are you? I'm not able to see you on the screen. Where is Abhi? Yes, Abhi. Beta, in first test your marks are very low, but yes, it's okay, no problem. It was the first test, and that too, that was the online kind of test, so it is very difficult for you people also to adjust. But from next time in next test, I want good marks. Promise? Yes, ma'am. Okay. 4.5 out of 10 Abhi, and Arnav Gangwar 4, Sujay 8.5 out of 10. Rest of anyone, these were the students Samagra who were not able to give the test due to the network. Garv Gumbar has not sent the sheet. Gurnoor, Mohammad Raza, Atashi has not given the test due to the network issue. These were the students that were present in class but were not able to do the test. Okay. Yes, Sujay. Ma'am, it was of previous class. Yeah, previous. Okay, okay. You raised hand for the previous class. Okay. Rudransh, yes. Yes, Rudransh. मैम मेरा कौन कौन से आंसर गलत हुए थे? आपको आंसर की मैंने भेजी है ना? That answer की मैंने भेजी. The thing I remember is one that you have done is elements of map wala wrong. Something you have done in that. And one
or 2 mistakes in the MCQ and spelling. That you can check from the answer key. Okay, I have checked from my side and given the marks. Okay, that's why I send the answer key properly. Okay, okay. Yes, Vihan. Ma'am, how many marks I get? I You got got 10 out of 10. 10 out of 10. Good. Yes, Aditri. Yes, Aditri. Aditri. Sirat, I need to tell you our marks. Your is left. Only your, Utkarsh, and my Aditri. marks कितने आए? My marks kitne hai? What kind of English you are speaking? How many marks I have got? You have got 10 marks out of 10. Aditri, you have got. Ma'am 9.5. Wait, let me check. I've written 10 out of 10. Okay. 10 out of 10. Yes, girl. Anna is smiling. That I also want 10 out of 10 in next test. Yes, girl. He's not speaking. Anna, beta, you have done mistakes in most of the mistakes in MCQ. I remember. I think. Okay. So Ma'am, I yes. have checked my paper from your WhatsApp and the answer key. I have done the spelling wrong of thematic map and two. And spelling also. And MCQ also, na? 1 or 2? Ma'am. See, I remember. Beta, I don't remember of everyone. If you can please, it's a request that if you can please go through the test today only when I'll send you the answer key. Okay? जैसे मैं आंसर की सेंड करती हूँ, आप अपना टेस्ट अपने अकॉर्डिंग चेक करके अपने मार्क्स कैलकुलेट करा करो. Fine. Okay. और जब मैं मार्क्स आपको बताऊंगी, I hope that will be same. If you do the spelling mistake, automatically cut your 0.5. Yes. Wait. Yes, what you're saying, Anna? And when you will tell the marks of next test? Hopefully Monday, Anna. Hopefully, if I'll get by Tuesday, max by Tuesday. Okay. Ma'am, when is the test of Chapter 3 will give time for that. अब उसके लिए थोड़ा सा हम time लेंगे because that is little lengthy chapter and you also need to study it very nicely, है ना? Okay. Okay. So now start studying for the not 1 week but more than four days at least, है ना? This week and then by Wednesday we'll take. Okay. So start studying, but this is the like oral reminder I'm saying you right now. Start studying for the next test, and you people are doing well. I'm not saying those who have got less marks. All are studying. Yes. Ma'am, you are saying that start studying for the next test, but the date is not final. But the date is not final, so you can't pre-study? Huh? You cannot do pre-study before the test. जैसे आपके पास test date आएगा, at least you have just time to revise, na? You have to revise only. Start studying. It means at least read the chapter 1122 paragraph daily, na? So when the test will be there, you will be ready for that. You don't need to study very deeply day before, Anna? Right? Am I right? Anna, is it a fruit break? Anna is following the school rules. Fruit break. Okay. Okay. And Vihan also. Juice break. Okay. Hardik is raising hand. Let me. Okay. Okay, Arav. You can leave. Arav girl. Time is also over. You can leave. Yes, Hardik. Ma'am, how many? Ma'am, how many? Hardik, you have got 7 marks. You have got 7 marks, and Hardik, you have done 1 to MCQ wrong. There were 4, and spelling you have done wrong. Rest you have written correctly, but आपने spelling और MCQ गलत कर दिया. ठीक है?
आप अपने आंसर से चेक कर लेना व्हाट वर योर मिस्टेक. मैम. ओके बेटा. ओके. Agam, you are not studying. Today you sat properly and this is the way to sit in class. Okay? आज आप अच्छे से बैठे हो और सुंदर भी लग रहे हो ब्लू टी शर्ट में. Fine. Okay. Okay, ma'am. So study well. Next time, Agam, I want your good marks. Okay? Ma'am, my marks is not good. Your marks are not good because you have not studied properly. You've got only 1.5. Today you have sent the sheet. Sheet send कर दिया आपने? Ma'am, can I do leave? I'm saying, have you sent the sheet of today's test? Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, everyone. I hope you enjoyed today's test. Give me a thumbs up, quick thumbs up that you enjoyed today's test. Okay. Bye. Bye. Bye, beta. Bye. Take care. Have a good day. Good morning, everyone. Sorry, good afternoon. These many students are only there. Rest are joining. Okay, we can wait for 1 or 2 minutes because students are joining. We can wait for one. Till then, everyone turn on your videos fast.
Everyone. Yes, students are joining. Turn on your videos. Yes. Seerat, Damanpreet, Aditya, Rudransh, Sherwin, Sujay, Ahana, Aradhya, Ayush, Aditya. Turn on your videos first. This is your class, last class. फिर आप enjoy कर सकते हो. अभी तो आप still बैठो बिल्कुल. And turn on your videos first. Okay. So now also your videos are not open. Turn on it. Okay. Now, Mudit, today was your music class, but this is my substitution as sir has to go for some urgent work. ठीक है? Clear? So this is your substitution. Now, this we were reading. हम ये रीड कर रहे थे. मैंने आपको फ्लैश ड्राइव तक सारा समझा दिया था. Now, what we'll start memory card. अच्छा, can anyone tell me memory card क्या होता है? Anyone? Raise your hand जिसको पता है. Who can tell me? Mudit Joshi. Mudit? Everyone be here only. Okay, Rudransh Tiwari. Can you tell me what is memory card? Ma'am, your voice is cracking. Now, can you tell me what is memory card? A memory card is the storage medium for files, digital cameras and music players. ओके, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या होता है मेमोरी? आप कहाँ यूज करते हो मेमोरी कार्ड? अपनी डेली लाइफ में कौन सी यूज करते हो? हमें ओके, सी मेमोरी कार्ड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुद्दित, कैन यू टेल मी मेमोरी कार्ड क्या होता है? व्हाट इज मेमोरी कार्ड? डिफाइन नहीं देखनी, मुझे बताओ अपने आप से मेमोरी कार्ड क्या होता है? मैम अच्छा, क्या मेमोरी कार्ड यूज करते हो? इन मोबाइल यस, करते हो, है ना? दैट इज व्हाट मेमोरी कार्ड. उसमें क्या होता है? आप अपनी कुछ भी चीजें स्टोर कर सकते हो. छोटी वो बहुत छोटी सी चिप होती है, वो आप निकाल के कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो. सो नाउ मुझे स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. मेमोरी कार्ड. Memory card. A memory card is a storage medium for portable devices like mobiles, digital cameras, and music players. It can be removed from these आगे devices and attached to a computer to access the card. These devices transfer images and music into a computer by using
a memory card reader that can be connected to a computer USB Yes. cable. Yes. Nowadays, most of the laptops come with inbuilt card reader port. Yes. See, what is memory card? अब मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज मीडियम होता है, मतलब कि हम इसमें स्टोर कर सकते हैं क्या, और ये क्या एक पोर्टेबल डिवाइस है. व्हाट इज पोर्टेबल डिवाइस? पोर्टेबल डिवाइस जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. ठीक है, जैसे मोबाइल्स, कैमरास, म्यूजिक प्लेयर, इन सब में हम क्या यूज करते हैं? मेमोरी कार्ड. और ये क्या होती है? ये इजीली रिमूव हो सकती है किसी भी डिवाइस से. वो इन डिवाइसेस में से किसी से भी आराम से रिमूव हो सकती है और हम कहीं भी इसे लेके जा सकते हैं. ठीक है, एंड अटैच टू कंप्यूटर. और ये हम अपने कंप्यूटर में भी लगाते हैं कि हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सके. इसमें से हम दीज डिवाइसेस, इसमें से क्या होता है? इसमें हम कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी म्यूजिक, कोई भी इमेजेस हम स्टोर कर सकते हैं. और फिर अगर हम कंप्यूटर में लगाएंगे किससे? यूएसबी केबल से, तो आप जो भी आपकी चिप में है आप उसे कंप्यूटर में देख सकोगे. क्लियर? आजकल लैपटॉप में इनबिल्ट कार्ड आ रहा है. इनबिल्ट मतलब जो अंदर ही इंस्टॉल्ड होता है. मेमोरी कार्ड आजकल लैपटॉप में इनबिल्ट आ रहा है जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते. क्लियर? इफ इट इज क्लियर, थम्स अप. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग से, ये जो ये वाली चीजें होती है ना, दीज थिंग्स, ये वाली, दिस स्मॉल फैक्ट, दिस यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन. ये आपको अपने आप पढ़ने हैं. This is also important. Fine. Now, multimedia card is a digital camera or mobile. Who will read it now? Hardik Shah. Hardik, Yes, read ma'am. this. Read this example. A memory multimedia card is small in size, approximated the size of postage stamp. Multimedia cards are available in various storage capacity ranging up to 512 GB. See, मेमोरी कार्ड क्या होता है? बहुत छोटा होता है और ये पोस्टेज स्टैम्प की तरह, जो हम स्टैम्प लगाते हैं ना, उसकी तरह होता है बिल्कुल. अगर स्टैम्प आपको कितना से लगता है, इतना सा अगर आप ऐसे करोगे तो कितना सा स्टैम्प लगेगा, तो इतनी ही आपकी कार्ड होता है, इतना ही. ठीक है, और ये बहुत कैपेसिटीज में होता है. कितने तक? 512 GB की कैपेसिटी तक ये होता है. The question can arise, what is the capacity of the memory card? What you will say? Up to 512 GB. Am I clear? Now it is computer ports. देखो कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे जिसमें आपने वो देखा है कि जैसे कीबोर्ड, हमें कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर से अटैच करना होता है तो तभी तो वो वर्क करता है. वो हम किससे करते हैं? पोर्ट्स. हियर यू कैन सी दिस इज मॉनिटर पोर्ट, जो हम मॉनिटर से अटैच करते हैं. अभी इसमें है नहीं, बट दिस इज मॉनिटर पोर्ट. ये कौन से है? माउस पोर्ट. ये कीबोर्ड पोर्ट, ये आपके उसमें होगा सारा बुक में. मैं अभी आपको और भी पोर्ट्स दिखाऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट व्हाट आर पोर्ट्स. मैं आपको पहले ये बताऊंगी पोर्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो हु विल रीड? गुरनूर. गुरनूर, read about ports. A computer port is a connection point or interface between a computer and an external or internal devices. Internal ports may connect devices like hard drive and CD-ROM or DVD drive, whereas external ports connect
internal devices like modem, printer, mouse, and other devices. Yes, now see. पोर्ट्स क्या होते हैं? पहले तो पोर्ट्स एक कनेक्शन पॉइंट होता है जिससे हम दो चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये कनेक्शन पॉइंट होता है जिससे हम दो चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं. या तो वो एक्सटर्नल कर सकते हैं या वो इंटरनल. एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली चीजों को, एक्सटर्नल मतलब अंदर वाली चीजों को. इंटरनल पोर्ट्स कौन सी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं? हार्ड ड्राइव, सीडी और डीवीडी ड्राइव. ये सब क्या होती है? जो सीडी रोम होती है या डीवीडी ड्राइव होती है या जो हार्ड ड्राइव होती है वो किस में कनेक्ट होती है? इंटरनल पोर्ट्स में. जो उनके अंदर पोर्ट्स बने होते हैं उनमें जाती है. वो हो गए पोर्ट्स. एक होता है एक्सटर्नल पोर्ट जिससे मॉडेम, प्रिंटर, माउस, बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है. जैसे ये सीपीयू के पीछे जो पोर्ट्स दिए हैं, ये जिससे माउस अटैच्ड है, कीबोर्ड अटैच्ड है, ये सारे दिए. कैन यू सी? दीज आर व्हाट? एक्सटर्नल पोर्ट्स. इंटरनल मतलब जिसके अंदर हम सीडी वगैरह डालते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, वो क्या है? इंटरनल पोर्ट्स. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इतना आपको समझ आया? उसके बाद मैं आपको पोर्ट्स बताऊं और डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स दिखाऊंगी. अगर इफ इट इज क्लियर यू कैन थम्स अप. अगर ये क्लियर है थम्स अप. गुड. ठीक है, क्लियर? नाउ I'll show you different type of ports. ठीक है? This. See. These are what? These are your ports. This is audio port. ये कौन सा पोर्ट है? ऑडियो पोर्ट. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्स में मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन गिव यू दीज पोर्ट्स. मैं आपको ये वाले पोर्ट की इमेज दे सकती हूँ एंड आई विल से टेल मी विच पोर्ट इज इट. ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो आपके अभी यूज में है वो कौन से पोर्ट है? लाइक दिस HDMI पोर्ट. ठीक है, ये HDMI पोर्ट है. जो सी व्हेन आई यूज द स्मार्ट बोर्ड इन द क्लास, तो मैं अपने लैपटॉप पे कुछ कनेक्ट करती हूँ. इट इज वाया HDMI पोर्ट. गेटिंग? HDMI पोर्ट का पोर्ट कैसा होता है? ऐसा स्लॉट होता है ये. See, when you are back to the school, I'll show you the different types of port. मैं आपको सारे टाइप के पोर्ट्स दिखाऊंगी. अब this is your headphone port. Everyone जो भी लैपटॉप में अपने काम कर रहा है, you can check in the side there are some ports. चेक करो, लैपटॉप के साइड में पोर्ट है. Is it there, Modit? I guess you have seen right now. है port? Ma'am, but it is charging. Charging point is there. Charging point ऊपर होता है. उससे नीचे headphones का होता है port. Small port होता है वो. There? Seen? ठीक है? तो वो for everyone जो भी अपने लैपटॉप में काम कर रहा है, you can see कि वो साइड में एक पोर्ट होता है. Now कीबोर्ड पोर्ट. कीबोर्ड पोर्ट कहाँ होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर में. डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड पोर्ट कहाँ होता है? सीपीयू के पीछे साइड में. कीबोर्ड पोर्ट कहाँ होता है? सीपीयू के पीछे. ठीक है, वो कैसा होता है? ऐसा. The image of that port is like this. ठीक है. देन माइक्रोफोन. माइक्रोफोन का कैसा होता है? ऐसा, जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं. माइक्रोफोन से हम रिकॉर्ड करते हैं और हेडफोन से हम सुनते हैं.
क्लियर? एंड मॉनिटर तो वेरी इजी, हम सीपीयू में पीछे ही लगा होते हैं मॉनिटर पोर्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। क्लियर? क्लियर? नाउ these are some important for you right now. These I'm taking it. जिसके पास बुक है you can check it, otherwise आज मैं ये आपको शीट दूंगी, ये आपको मैं भेजूंगी शीट। ये USB पोर्ट, ये स्पीकर पोर्ट, these all are the important ports for you right now. And this is telephone line in, means network port also. This is network port, this is telephone line. See, जब कोई इंटरनेट कनेक्शन करना होता है, इंटरनेट कनेक्शन में सबने वो एक केबल देखी है, ठीक है? केबल से वो क्या होते हैं, वो टेलीफोन लाइन में पीछे ही कनेक्ट करते हैं उसके, दैट इज ऑल्सो अ पोर्ट। These all ports are important for you for this class, this course. The ports that I have ticked, check it. Clear? Now, do you want to see it again? 1 minute is there, you can go through all the ports. You can go through it, because these are important. It can come in your exams. Fine. Now, see, yes, Seerath, you are having computer book. Very good. Now, it is done. आपका सी फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। Yes, Ahana, good, very good. Yes, I have seen your book. So today your first chapter is completed. So till now, if there is any problem in chapter 1, you can ask me right now. I'm giving you 2 minutes. Go through your books. Go through that sheet. अगर जिसके पास books नहीं है, वो वाली sheet देख लो, वो वाली sheet देख लो जो मैंने आपको send की थी. Go through it. कोई doubt है तो fast. Yes, Rehan is raising hand. Yes, Rehan. Ma'am, in book it is not given. It is not given in book. It is not given in book. I am giving you this extra sheet that you will paste it in your notebook. But right now, as your school is not open, जब school open होता है मैं आपको print करके देती. But right now I'll send you the soft copy. Fine? Okay, ma'am. Ma'am. Yes. Ma'am, we do the exercise. Ma'am, अपने आप करेंगे कि मैम आप भेज? No, I'll send you. I have sent you all the exercises. मैंने आपको सारी भेज दी है. Now just 2 or 3 questions are left of this chapter. Nothing else. Ma'am, match the following and answer the following. हाँ वो, yeah. Match the following that you can do on your own. Match the following आपको अपने आप करना है. Fine? Only match the following. Okay. Everyone understood? Yes, Sujay is raising hand. Yes, Sujay. Yes, Sujay, tell. What happened? Doubt? You are not audible. Not audible. You can send me the message. I'll read. Shresh, what is hard disk? हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक डिस्क होती है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन. और हार्ड डिस्क कितने वो उसकी होती है, उसमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है? टिल 8 टेराबाइट. अप टू 8 टेराबाइट हार्ड डिस्क कैन स्टोर. Aditri has shown you the hard disk also. Aditri ने आपको हार्ड डिस्क दिखाई भी थी जो आजकल यूज हो रही है. But previously hard disk was coming inbuilt. Clear? Shresh, clear now? Okay. Sujay, what is a port? Right now I told port is a thing जो आपकी दो को merge करती है. Like अगर आपको कीबोर्ड को अपने
कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, तो आपको उसको उसके पोर्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा. इट इज व्हाट पोर्ट. व्हाट सॉरी, पोर्ट क्या करता है? कनेक्शन इंटरफेस देता है दो ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? ओके, नाउ एनीवन? Yes, Sujay, Sira, tell me. You have written only ma'am. Yes, wait, I am unmuting you. Wait. Yes, Sira. What happened? मैम आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जो बुक में भी हो और आपने कहा है कि उनको नोटबुक में भी लिखना है, तो उनको नोटबुक में भी लिखना है. Sira, because students are not having the book right now. That no students have book, they can write in the book only. Yes. Only few और students are. मैम आपने कहना चाहती थी कि मैम एक पेज में मैम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूरे नहीं आ रहे, तो मैंने वो नोटबुक में कर दिया. So that you have to do in your notebook. First of all, yes, that's why right now I told everyone कि you can do everything in notebook because right now you don't know कि कितना book में आएगा. आप लोग ऐसे ही लिख दोगे. So that's why I am saying you to write. I have written this kind. हाँ, you have to write neat and clean. जो आपका बुक में आ रहा है, you can do in book. Otherwise, you have to do in notebook only. Don't mess it up like you are writing very small spaces. Don't do it at all. Fine. Okay. Okay. Yes, Anna, you are raising your hand. What happened? Wait, Anna, I am unmuting. Wait. Yes. Tell me. Excuse me, ma'am. Those who have books, the exercise, the work you have given in our notebook. Yes, those who are having the book, you can do exercises in the book only. No issue. Ma'am, the work you are giving in the to do in the notebook, we can do that work in the book because the same work that is the same work that is there in the book. Yes. See, I am telling you again. See, that time most of the students were not having the book because of lockdown. ठीक है? अब जिसके पास books हैं, they can do exercise in the book और जो questions book में आ रहे हैं सिर्फ वही book में करोगे. Otherwise, you have to do rest questions in your notebook. I guess 1 or 2 questions I have put it extra. Like one question is there in book, I can tell you. Differentiate between internal memory and external memory. ये है book में questions है. ये मैंने उसके 4 points दिए, but वो 4 points इसमें नहीं आएंगे. So you can write it in your notebook. Fine. जो exercise आप सारी इसमें कर सकते हो book में, but जो क्वेश्चन के आंसर बुक में नहीं आ रहे, वो आंसर्स आप अपनी नोटबुक में करो. Am I clear? Okay. Yes, Mudit, you were asking me some question. Yes. I have done some work in notebook. No issues. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिसने नोटबुक में करा है कोई बात नहीं, because I know अभी बुक्स की प्रॉब्लम थी. जो आपको exercises आप नोटबुक में बुक में कर सकते. But don't mess it up. I am repeating it again and again. Don't mess it up. अगर बुक में नहीं आ रहा तो आप नोटबुक में कर लो. Fine? Yes, Anna. Ma'am, some of the exercises I have done in notebook. After more exercises that you will give, I can do in notebook, and the exercises I have done in notebook, that also I have to do in book. बुक में तो बस आपको आना एक वर्ड लिखना है. You have to just write a word. Nothing. आप क्या करो? अगर आपने नोटबुक में लिखा है, you can learn it from there. Just write down the answer in the book on your own. From this, you can do 2 things. आपको learn भी अच्छे से हो जाएगा and you can complete the work also. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now any doubt?
रुद्रांश, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक कनेक्शन पॉइंट या इंटरफेस होता है दो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स के बीच में। लाइक कीबोर्ड को अगर आपको अपने कंप्यूटर से अटैच करना है तो आप उसको पोर्ट से अटैच करोगे। विद whom you'll attach to the port. So what does port help us to do? It helps us to give the connection between two objects. Clear? Clear, Rudransh? Now any other doubt? First of all, everyone, unmute yourself first. Oh, sorry, unmute, I'm saying that. Turn on your video first, everyone. I'll mark absent. अगर आपने अभी वीडियो ऑन नहीं करी, I'll mark absent. I don't know where are you. मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से तो आप क्लास नहीं ले रहे ना। अगर आप मुझे दिख नहीं रहे तो so I'll put absent. Yes. Now you turn on your videos. Yes, good. Aradhya and Shashwat, turn on your videos. Yes. Now I guess it is clear to all. क्योंकि अब किसी का डाउट नहीं आ रहा. So today I just give you the overview of second chapter. मैं just आपको आज overview दूंगी. आज मैं start नहीं करूंगी, सिर्फ overview दूंगी. ठीक है? और okay, I can do one thing. Today I'll ask some questions related to it. First chapter से मैं आज आपसे questions पूछती हूँ. Second we'll start later. मैं आज आपसे first chapter के questions पूछती हूँ. So now. The first question is for Gurnur Walia. Gurnur, tell me the answer. The data which we put into the computer is processed by you. All can send me the answer in the chat also. Yes, correct. Shashwat, time is not over yet. Seera, time is not over. Just concentrate here. Yes. Many students are giving correct answer. Gurnur, I am not getting your answer. Tell me. Not audible. You're not audible. Devansh. Okay, Hardik Shah. Tell me the answer. The data which we put into the computer is processed by the... No, abhi not in... Okay, second one answer. You don't know? No, नहीं आता हार्दिक? ठीक, आपने पढ़ा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट. अगर मैं इनपुट देती हूँ उस चीज को प्रोसेस कौन करता है? CPU. हाँ, so answer will be what? CPU. ये मैंने पढ़ाया है ना आपको क्लास 3 में. I told you the data which we put into the computer, जो मैं एंटर करती हूँ कंप्यूटर में, किससे प्रोसेस होता है? CPU से. The processed data is known as, who will tell me? Ahana. The processed data is known as what? जो डेटा प्रोसेस हो गया है उसके बाद क्या मिलता है मुझे? आउटपुट. तो वो क्या होता है? Information. Yes, the answer will be information. Second one is information. Very good.
The information in the computer is stored in the form of dash digits. Shresht. The information in the computer is stored in the form of dash digits. Which digit? Binary digits. Yes. See, अभी तो ये है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ. You have to study in between also. मैं आपको in between भी दे सकती हूँ. ठीक है? Now you are grown up students. I can give you. The flash drive is also known as Archit. Tell me the answer. It's very easy. The flash drive. Pen drive. Yes. Pen drive. Yes. The answer is pen drive. The flash drive is also known as pen drive. अब ये सभी बता देंगे. The information stored in the dash memory is lost when the power goes off. कौन से की information उड़ जाती है जब power चली जाती है? देवांश, किसकी होती है? Unmute yourself. मैम किसकी होती है? मैम रोम. रैम की होती है. अरे रैम की होती है. देखो, जब उसकी पावर उड़ जाती है, जब वो पावर नहीं होती तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है. इट इज रैम. रोम तो स्टार्टअप में काम आता है ना. यस देवांश. मैम मैंने रैम बोला था. ओके, आई थॉट यू सेड रोम. नो इशू. गुड. अंडरस्टूड. अब ये चैप्टर क्लियर हो गया. इट वाज वेरी इजी. इजी. सी, ठीक है, आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, एंड आई गेस यू अंडरस्टूड ऑल्सो. अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसका, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. क्लियर? ओके ओके, ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू गो. ओके, बाय एवरीवन.